Hello everyone. In today's video, I am going to do mixed questions of class 9th NCRT based, and here these are given as holidays homework. So let's start doing the questions. Question number 1. Two dice are thrown at a random. So you know well that when two dice are thrown simultaneously, when two dice are thrown simultaneously means together. When two dice are thrown simultaneously, the elementary events are we need to write all elementary events when two dice are thrown. There are 36 outcomes. Like on first dice number 1 comes, on other dice also number 1 will come. On first dice 1 will come, on other dice 2 will come. Then on first dice 1 and on other dice 3, then 1 and 4, then 1 and 5, and last will come 1 and 6. Means first die number 1 on other 1, on first 1 on other 2, on first 1 on other 3, then on first 1 on other 4, first 1 on another 5, on first die 1 number will come, on other 6 will come. Then it may come like this: 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, and 2 6, right? Then it may come like this: 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, and 3 6. Then the elementary event may come like this: 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, and 4 6. Then elementary events may come like this: 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, and 5 6. And last row: 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, then 6 5, and last is 6 6. Now the questions are there. See, there are total how many outcomes? 36. So I have written here total number of outcomes is equal to 36. Now part number 1, that find the probability that an even number is there as sum. So on both the die there are the numbers. So I will write the elementary events, the elementary events when sum is an even number. So how you are to come to know that sum is an even number? See, 1 plus 1 gives 2. So 2 is an even number, so you will consider this. 1 plus 2 is 3. 3 is an odd number, you will not take. 1 plus 3 is an even number because 1 plus 3 is 4, so you will consider this. 1 plus 4 you will not consider because sum is 5. 1 plus 5 is 6, you will consider this. 1 plus 6 is 7, so it is not even, so you will neglect this. 2 plus 1 3, not to take. 2 comma 2, that is 4, so you will take it. 2 plus 3 is 5, not to take. 2 plus 4 you will take because sum is 6. 2 plus 5 neglect it because 7 is the sum. 2 plus 6 you will take because sum is 8 and 8 is even number. 3 plus 1 4, so it will also be taken.
3 plus 2 is 5, not to take. 3 plus 3 will be taken because sum is an even number. 3 plus 4 not to take because sum is odd. 3 plus 5 is 8, sum is even, so you will take. 3 plus 6, neglect it. 4 plus 1, 5, neglect it. 4 plus 2, take it because sum is even number. 4 plus 3, not to take. 4 plus 4, yes, you will take it because sum is 8. 4 plus 5, 9, neglect it. 4 plus 6, 10, take it. 5 plus 1, 6, sum is an even number, take it. 5 plus 2, 7, no. 5 plus 3, yes, because sum is even number. 5 plus 4, neglect. 5 plus 5, yes, it is to be taken. 5 plus 6, leave it because sum is 11, not even number. 6 plus 1, 7, neglect it. 6 comma 2 you will take because sum is 8. 6 plus 3, 9, neglect it. 6 comma 4, 10, sum is even, you will take it. 6 plus 5, neglect it, sum is 11. And 6 comma 6 you will take because sum of both the digits is even number. So number of favorable outcomes you will check now. How many are there? Number of favorable outcomes. Favorable outcomes means the outcomes that support that the sum on the both the dice is an even number. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So number of favorable outcomes are 18. Now you need to find the probability. So I am writing a required probability. Required probability and required probability P, and in the bracket I am writing an even number as sum. An even number as sum. So what is the formula of probability? Number of favorable outcomes upon total outcomes. So favorable outcomes are 18 and total are 36. So 18 ones are 18 and 18 twos are 36. Second part of the same, this is probability at a total of at least 10. So a total of at least 10 when you are to proceed. So see how it is to be done. Means the sum should be at least 10, minimum 10. It can be more also, like it can be 11 also, 12 also, more than 10 also can be there. So the elementary events, the elementary events when the elementary events a total when a total is at least 10, is at least 10, कम से कम 10, 10 से कम नहीं आना चाहिए. तो 1 + 1 1 + 2 ये कुछ भी नहीं होंगे बिकॉज सम इज हियर 2 3 4 5 6 7. ये भी नहीं होगा 3. 2 2 भी कर दो कैंसिल बिकॉज 4 आएगा सम. 2 + 3 भी 5 आएगा, ये भी नहीं होगा. ये 6 होगा, 7 8 कुछ नहीं आएगा इसमें से. 3 1 भी नहीं लेंगे, 3 2 भी नहीं लेंगे, 3 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि आप जब सम कर रहे हो तो 10 से कम आ रहा है. 3 + 4 भी नहीं लेंगे, 3 + 5 भी नहीं लेंगे, 3 + 6 भी नहीं लेंगे. 4 1 भी सम 5 दे रहा है, ये भी 6 दे रहा है, ये भी 7 दे रहा है, ये 8 दे रहा है, ये 9 दे रहा है. एटलीस्ट 10, कम से कम 10. तो 4 and 6 you will take because it is giving sum as 10. So I have taken it. फिर 5 + 1 भी नहीं लो, 5 + 2 भी नेग्लेक्ट कर दो, 5 + 3 को भी छोड़ दो, 5 + 4 को भी छोड़ दो. 5, 5 को ले लो बिकॉज इट इज गिविंग सम एज 10. 5 + 6 को भी लेना पड़ेगा क्योंकि उसने एटलीस्ट 10 बोला है. तो 10 से ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है कम से कम. तो कम से कम 10 तो होना चाहिए. अगर सम 10 से ज्यादा आए तो वो भी ले लेना है. 6 + 1 7, ये भी छोड़ दो. 6 2 भी छोड़ दो, 6 3 भी छोड़ दो. 6 4 आपको लेना पड़ेगा. 6 5 भी ले लो और फिर आप 6 6 को भी ले लो बिकॉज ऑल दीज आर गिविंग सम एज 10 और मोर देन 10. अब आप
फेवरेबल आउटकम्स काउंट करो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो कितनी आउटकम्स आएंगी फेवरेबल, 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स आर फेवरेबल टू दिस इवेंट। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी P, and what is P? P is a total of at least 10. So I am writing in bracket a total of at least 10. फॉर्मूला वही रहेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 6 फेवरेबल है और टोटल 36 है। कैंसलेशन जरूर करनी, अगर कैंसलेशन होती हो तो 1/6 जो है वो इसका आंसर आएगा। अब इसका एक थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है? दिस इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज अ प्राइम नंबर। तो द elementary events the elementary events when the elementary events when sum is a prime number, when sum is a prime number। आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय देमसेल्व्स। और उसकी दूसरी डेफिनेशन ये है, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, तो 7 के सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, 1 और 7। तो अब आपने ऐसी फेवरेबल आउटकम्स देखनी, तो ये देखो 1+1 आता है 2, एंड 2 इज इनफैक्ट अ प्राइम नंबर। तो आप इसको लेकर चलोगे 1+1 को। फिर आती है अगला 1+2। तो 1+2 का सम है 3, तो 3 भी तो प्राइम नंबर है, सो यू विल टेक 1+2। फिर 1+3 आप नहीं लोगे बिकॉज सम इज गिविंग 4, और 4 जो है वो कंपोजिट नंबर है। 1+4 इज गिविंग 5, डेफिनेटली यू विल टेक इट बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। 1+5 नेग्लेक्ट कर दो बिकॉज सम इज 6। 1+6 आप ले लो बिकॉज सम इज अ प्राइम नंबर 7। फिर 2,1, 2,1 भी आप कंसीडर कर लो बिकॉज इट इज गिविंग अ सम एज अ प्राइम नंबर। तो इस तरह से बाकी भी आप एक एक करके चेक करोगे, एंड यू विल सी वेर एवर द सम इज कमिंग एज प्राइम नंबर। तो 2 1 के आगे कौन सी ऑप्शन आएगी? 2 2 चेक करो, 2+2 इज गिविंग 4, लीव करो। 2+2,3 आप कंसीडर कर लो। 2,4 को छोड़ दो बिकॉज सम इज 6। 2,5 को ले लो बिकॉज सम इज 7, एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। 2,6 लीव बिकॉज सम इज 8, 8 is a composite number। 3,1 leave it because sum is composite number। 3,2 you will take because sum of 3 and 2 is 5, 5 is a prime number। 3,3 leave। 3,4 you should consider because sum is 7। 3,5 is 8, leave it। 3,6, 3 plus 6 is 9, composite number, leave that also। 4,1 you can consider because 4 plus 1 is 5, 5 is an even number। 4+2 means 4,2 neglected, 6 sum it is there। 4,3 you can consider because sum is even number। 4,4 leave। 4,5 9, so leave। 4,6 4 plus 6 10, leave that। 5,1 6, leave that। 5,2 you will take। 5,3 not to take। 5,4 not to take। 5,5 not to take। 5,6 should be taken। 6,1 take it। 6,2 leave। 6,3 leave। 6,4 leave। 6,5 you should take। तो ये सारी फेवरेबल आउटकम्स आ गई कि सम जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो अब आपने लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 आर द फेवरेबल आउटकम्स। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, therefore a required probability
तो कैसे फाइंड आउट करनी है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? पी ब्रैकेट में सम इज अ प्राइम नंबर, सम इज अ प्राइम नंबर, तो ये हो जाएगी फेवरेबल आउटकम्स यानी 15 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, 3 5 जार 3 1 जार 3 3 2 जार 6, तो आंसर है इसका 5 अपॉन 12. So this is the solution of question dealing with throwing two dice simultaneously and to find the probability of the various types of questions associated with it. Hope you have well understood the solution of this question. If you have understood the question very well, please comment in the comment box so that the next videos can be made accordingly to your feedback. If you have liked the video, like it and share with your friends so that maximum of the students can be benefited. Thank you very much.